प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो આપણે we'll start with the Posh Dashmi Aradhna Vidhi. So today is Posh Dashmi. Posh Dashmi is a 3-day parva to celebrate the Janma Kalyanak and Diksha Kalyanak of Parshnath Bhagwan. So in this Posh Dashmi Aradhna, we do 3 ekashnas. So on the first day, that is Maksar Vad Naum, we do the ekashna of sugar water, Sakar no Pani. On the second day, that is Makshar Vad Dasam. Today is Makshar Vad Dasam. That is Janma Kalyana of Parshnath Bhagwan. We do ekashna of Kheer. And on the third day, Maksar Vad Agyaras, that is Diksha Kalyana of Parshnath Bhagwan, we do Bharyu Bhananu ekashna. That means you have to do regular ekashna, but you have to eat less than the regular ekashna. So you have to do kind of Unodari Vrat as well. So it's called Bharyu Bhananu ekashna. So you have to do 3 ekashnas, and the first 2 ekashnas are Tam Chaviyar. That means once you do ekashna, you can drink water only while you are doing ekashna, and then you have to take the Chaviyar Pachkan. So first 2 ekashnas are Tham Chaviyar, and the third ekashna is a regular ekashna. Apart from doing 3 ekashnas on the Posh Dashmi, you also have to do some Aradhna Vidhi. So you have to do 12 you have to do 12 swastiks, you have to do 12 fur, you have to put 12 fur, 12 naived, then you have to do 12 pradakshinas, you have to do 12 khamashanas, you have to do 12 logas no kausarg, and apart from that, you have to count 20 malas. So 20 mala of Parshnath Bhagwan. So you can count mala of Om Rim Parshnath Arhate Namah, or you can count Om Rim Shri, Om Rim Aram Shri Parshnathaya Namah, or you can even count Om Rim Shri Dharmendra Padmati Paripujitaya Shri Sankeshwar Parshnathaya Namah. The idea is to count 20 malas of any of these mantras. So this is the Aradhna Vidhi of Posh Dashmi. So why do we do Posh Dashmi Aradhna? So in Shastra it is said, that those who do this Posh Dashmi Aradhna for a period of 10 years and 10 months can get Shanti, can get Samadhi Maran, and can get Sadgati in the next bhav. So this is the whole idea of doing Posh Dashmi Aradhna. So let's look at the Posh Dashmi Aradhna. So Posh Dashmi Aradhna is done for a period of 10 years and 10 months. And on every Posh Dasam, that is Makshar, Vad, Naum, Dasam, and Agyaras, you have to do 3 ekashnas. And every day, you have to do this 12 sastiks, 12 fur, 12 naived, 12 khamashnas, 12 pradakshinas, and 12 logas no kausarg, and count 20 malas on all the 3 days. Apart from that, every month on Vad Dasam, you have to do the same Aradhna. Okay. So you have to do this Aradhna every month for a period of 10 years and 10 months. Apart from that, you have to also do the daily Avashyak Kriya of Rai and Devasi Pratikaman. So that is very important. Okay, you have to do the daily Avashyak Kriya of Rai and Devasi Pratikaman. If possible, you have to do Ashprakari Puja of Parshnath Bhagwan or Snatra Puja of Parshnath Bhagwan on every Vaddasam. And you have to also do Brahmacharya Kapalan, okay, on every Vaddasam. So these are the basic requirements, basic things that you have to do for a period of 10 years and 10 months. And after you complete this stuff, it is said that you have to celebrate this stuff with a Swami Vatsalya, Grand Swami Vatsalya, to celebrate the occasion of completion of this stuff. So this is the basic Kriya. Apart from that, in our Shastra, it is said that if you do Posh Dashmi Aradhna for the whole 10 years and 10 months, then, and also
once a year on every Posh Dasam, you have to listen to the Parshnath Bhagwan Jivan Charitra. Okay, once a year on every Posh Dasam, you have to listen to the Parshnath Bhagwan Jivan Charitra from the Mukh of Guru Maharaj Sahib. So if you do this for a period of 10 years and 10 months, it is said that you will get Shanti, Samadhi Maran, and Sadgati, and ultimately Moksha in few bhavs. So this is the whole reason we are doing the Posh Dasmi Aradhna. So here in this session, we'll talk about the Parshnath Bhagwan Jivan Charitra. We ought to do this once every year. So we will listen to the 10 bhavs of Parshnath Bhagwan. So you all know, you have the basic understanding of Parshnath Bhagwan ka Jivan. And then we will start with the Posh Dasmi Aradhna. So let's start with the Parshnath Bhagwan Jivan Charitra. So Parshnath Bhagwan Jivan Charitra is consist of 10 bhavs. Okay. So for all the Tirthankar Paramatma, the first bhav is when they achieve Samkit. Or when they achieve Samyak Darshan, it's considered their first bhav. So Parshnath Bhagwan achieved Samyak Darshan in the bhav of Marubhuti. And then after 10 bhav, then Parshnath Bhagwan achieved Moksha. So this is an amazing story of Parshnath Bhagwan that everyone should know. And we will start with the first bhav of Marubhuti. Okay, listen to this story carefully. I'm going to say this story in simple English language. And I've taken this story from our Granth called Trisashti Salaka Purush Charitra. Okay. So first bhav of Parshnath Bhagwan is Marubhuti. In the city of Potanpur in Jambudvip, it was ruled by King Arvind. In the same city, one religious Brahmin, Vishwabhuti, was residing with his wife Anuradha. They had two scholar sons. One was Kamat and one was Marubhuti. Though Kamat and Marubhuti were brothers, there were vast differences in their nature. Elder brother Kamat was angry, immoral, whereas Marubhuti was patient, well-mannered, and full of virtues. Both were married. Varuna was a wife of Kamat, and Vasundhara was a wife of Marubhuti. The parents handed over the responsibilities of the family to both the brothers when they passed away. Marubhuti was compassionate and was helping King Arvind with handling the family affairs and the affairs of state. Due to this, he frequently had to go out of town. Marubhuti's wife Vasundhara was very beautiful. Though Kamat was married, he was completely engrossed in Marubhuti's wife Vasundhara. One day when Marubhuti was out, Kamat forcibly abused Vasundhara. Varuna saw this and she told Marubhuti upon his return. This was unbelievable and shocking for Marubhuti that his brother would do such a thing. Marubhuti told the incident to King Arvind. How can a king tolerate this kind of stuff? King arrested Kamat and he punished Kamat by making him sit on the donkey and roam all over the city of Potanpur. Kamat became angry, thinking Marubhuti responsible for his humiliation. He complained to the king that Marubhuti complained to the king, and hence I had to bear such a shame. Thinking this, Kamat ran away into the forest and he became a Brahmin sadhu. Once he was meditating with a huge hatred in his heart for Marubhuti. Marubhuti was feeling down. He thought that he is responsible for his elder brother's insult and I should go and do the Shama Yajna. So Marubhuti came to the forest to say sorry to Kamat. He was about to go to Kamat, but Kamat threw a big stone on Marubhuti's head, and Marubhuti's head got smashed, and Marubhuti died immediately. King Arvind came to know this, and he realized the asartha of this sansar, and King Arvind took Diksha. Kamat ran away and ultimately died with Ardhyadhyan in his heart and became snake called Kukut snake in his next bhav. Marubhuti also died with Ardhyadhyan. He had Ardhyadhyan in the last moment of his death and became elephant in the next bhav. Okay, so first bhav में Marubhuti और कामत थे, वही दूसरे bhav में पार्शनाथ भगवान का जीव जो मरुभूति था वो एलिफेंट बना है बिकॉज ऑफ आर्थ ध्यान, एंड जो कामत का जीव है वो क्रोध के कारण वो स्नेक बना है. ओके, सो दिस इज द सेकंड भाव. So Marubhuti, he became elephant in the next bhav and he became spouse of 500 female elephants. Here King Arvind, he took Diksha and became Arvind Muni. Arvind Muni once reached Samet Sikhar with a huge sang. The Atma of Marubhuti, who was now elephant, came to the foothills of Vindhyachal mountains.
He saw huge crowd and became angry as he liked to remain lonely. He became out of control and started throwing people in its trunk and also smashed many people under his feet. The angry elephant came directly in front of Arvind Muni. People became scared thinking this angry elephant will hurt Arvind Muni. Looking at Arvind Muni, elephant stopped. Audhignani Arvind Muni said to the elephant, "Oh Marubhuti, in previous bhav, you accepted Sravak Dharma. In previous bhav, you went to apologize to your brother who was guilty of abusing your wife. And here, in this bhav, you are killing innocent people. You died and became elephant due to Artha Dhyan. And you are still continuing with this Artha Dhyan." Listening to this elephant got Jati Smaran Gyan. Muni explained the Shravak Dharma and an elephant accepted 11 व्रत्स of Shravak. अभी तो तिर्यंज का जीव है ना, they cannot accept all the 12 व्रत्स. They have to take 11 व्रत्स क्योंकि लास्ट जो अतिथि संविभाग व्रत है, they cannot do it. So maximum तिर्यंज का जीव can follow 11 व्रत्स. So here elephant takes the 11 व्रत of Shravak. So elephant was living peacefully. Once he went to the lake for drinking water. Eve went ahead and his legs got trapped into the mud. It struggled to get out, but he went deeper into the mud. He realized that he won't be able to survive and his death is definite. He started Panch Parmesti Smaran. At the same time, Kukut snake, Kamat's Jeev, came over there and seeing the elephant, he got angry because of his previous bhavs, Vair Bhavna. Snake stinged the elephant repeatedly and the elephant died in acute pain in peacefully in Smaran of Panch Parmesti. Due to this Samadhi Maran, Maruputi's Jeev went to 8th Devlok called Sahastrar. Okay, तो पार्श्वनाथ भगवान का जीव पहले मरुभूति, फिर एलिफेंट को समाधि मरण होता है, and एलिफेंट का जीव it goes to 8th Devlok. Okay, here Kukut snake lived his life in Rautra Dhyan and went to 5th Narak. Okay, एक जीव ऊपर चढ़ रहा है और एक जीव कंटिन्यूसली नीचे उतर रहा है. Jeev of Marubhuti lived 17 Sagaropam in the 8th Devlok and his name was Shashiprabh. He worshipped Tirthankar Paramatma in various ways and did various Dharma Aradhna and made his Samyak Darshan even more pure and Suddh. Jeev of Kamat also lived 17 Sagaropam in the 5th Narak in acute pain and torture. Okay, तो यहाँ पे 3 भाव फिनिश होते हैं. अभी 4th भाव पार्श्वनाथ भगवान का है किरण वेग मुनि. ओके, इन सुकच्च विदेह, ये महाविदेह क्षेत्र की बात है. इन सुकच्च विदेह देयर इज अ ब्यूटीफुल सिटी कॉल्ड तिलक. इट वाज रूल्ड बाय विद्याधर किंग कॉल्ड विद्युगति and had a queen called Kanak Tilak. After completing 17 Sagaropam of Avishya in the 8th Devlok, the Jeev of Marubhuti came to the womb of Queen Kanak Tilak. He was named as Kiran Veg. When Kiran Veg matured, his father handed over the responsibility of the kingdom and took Diksha. Kiran Veg married Vidyadhar princess called Padmavati, and they had a son called Kiran Tej. One day, a Suguru Mahatma came to the town and he took Diksha under Maharaj Sahib. So, Parshanath Bhagwan ka Jeev, wo Diksha leta hai. And he acquired Akash Gamini Vidya. By this Vidya, he went to Pushkarawar Dweep and did Vandan to all the Saraswati Pratimas. And after that, he went to Vidyadhar mountain to do the meditation and dhyan. At the same time, the Jeev of Kamat, after completing the painful Ayushya of 17 Sagaropam in the 5th Narak, was again born as a snake. Abhi Ajgar, he was born as a python. Looking at Kiranvek Muni, he recalled its previous bhav's enmity. So he swallowed Kiranvek Muni completely. यहाँ पे वो पाइथन वापस पार्श्वनाथ भगवान को जीव को मार डालता है, तो वो पूरा swallow कर देता है पार्श्वनाथ भगवान को. After tolerating acute pain, Muni had Samadhi Maran and was born in the 12th Devlok. देखो पार्श्वनाथ भगवान का जीव एवरी भाव में समाधि मरण आता है, उनको इतना पेन में वो समाधि रख सकते हैं. तो एंड ही अभी उनका जीव और ऊपर बढ़ रहा है. He goes to 12th Devlok. The helpless snake died because of forest fire in the next bhav, and in the next bhav, the Jeev of Marubhuti was born in Jambum Vrat Viman in the 12th Devlok, and the Jeev of Kamat was born in the 6th Narak called Tamaprabha.
Both were having Ayushya of 22 Sagropams. One Jeev is climbing up the ladder of success and going towards moksha, and another Jeev is falling down because of Vair Bhav. Okay, तो यहाँ पे 5 भाव फिनिश होते हैं, अभी 6th भाव. Okay, पार्श्वनाथ भगवान का 6th भाव है वज्रनाभ, किंग वज्रनाभ. In the 6th bhav, Jeev of Marubhuti, after completing 22 Sagropam Ayushya, came to the womb of Queen Lakshmivati, residing in the beautiful city of Subhankar in the eastern Videh. वापस महाविदय क्षेत्र में जन्म होता है. Tirthankar Bahu and Subhahu both existed there. The Jeev of Marubhuti was named Vajranabh. Mature Vajranabh became a king of a huge empire. He acquired a foremost place in the heart of people by his good deeds. He handed over the responsibility of kingdom to his son and took Diksha under Avdigyani Shamankar Muni. Okay, वापस वो दीक्षा लेते हैं. One day, Vajranabh Muni was doing dhyan in the forest of Sukach, and suddenly one arrow pierced in his chest. After painful life in the 6th Narak, the Jeev of Kamat got birth in inferior Bhil tribe. अभी उसको मनुष्य का भाव मिलता है, पर वो inferior भाव भील जाति में. He was dark-bodied and was named as Kurangad. Kurangad was wandering in the forest for hunting, and he saw Vajranabh Muni, and due to Vair Bhav, he immediately released his arrow. His arrow pierced the delicate organs of the body. Peacefully, Muni endured the pain. He didn't have the slightest of Dvesh Bhav. He gave Shama to Kurangad and died a Samadhi Maran and got birth uh, in the 5th Gravyak Devlok. अभी 12 देवलोक के ऊपर 9 ग्रेवियक होते हैं और 9 ग्रेवियक के ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं, तो और ऊपर बढ़ रहे हैं. सो पार्श्वनाथ भगवान का जीव वापस समाधि मरण होता है एंड अभी वो 5th ग्रेवियक देवलोक में उत्पन्न होते हैं. Kurangad was very happy that he killed a monk and he went to 7th Narak. तो वो सबसे नीचे वाला नरक एक सबसे ऊपर वाला देवलोक की तरफ जाता है और यहाँ पे वो 4th नरक नहीं 5th नरक 6th नरक कभी वो 7th नरक में जाता है. So Jeev of Marubhuti was named as Dev Lalitang in the 5th Gravyak Devlok with the Ayushya of 27 Sagropams. Though he was surrounded by Bhog Samagri, he remained completely detached. On the other hand, the Jeev of Kamat went to 7th Narak with the Ayushya of same 27 Sagropams. तो यहाँ पे 7th भाव फिनिश होता है, अभी 8th भाव. ओके, पार्श्वनाथ भगवान और कामत का. So 8th भाव है किंग सुवर्ण बाहु. In the 8th bhav, the Jeev of Marubhuti came to the womb of Queen Sudarshana, wife of King Sushil Bahu, at Puranpur city in the eastern Videh. वापस महाविदय क्षेत्र की बात है. The mother saw 14 great dreams, indicating the birth of Chakravarti. He was named Suvarna Bahu and married Princess Padmavati, the daughter of Ratnapur city's King Khechar. The Chakraratna was developed in the armory and he conquered all the 6 continents. One day, Tirthankar Jagannath came to the city of Puranpur. He came to know the asartha of the sansar, listening to the Dikshna and took the Diksha. अभी वापस चक्रवर्ती भम में वापस वो दीक्षा लेता है. देखो पार्श्वनाथ भगवान का जीव सब कुछ भोग सामग्री छोड़ के एवरी भम में वो दीक्षा लेता है, राइट. He did Vistanak Tap, Aradhna in the best manner and acquired Tirthankar Nam Karma. Once he was doing dhyan in Shinvarna forest. At the same time, the Jeev of Kamat was born as a lion after completing 27 Sagropam Ayushya in the 7th Narak. He saw the Muni in Kausarg. Due to the previous bhavs Vair Bhav, he leaped on the Muni and killed the Muni. Muni died Samadhi Maran and went to the 10th Devlok. अभी वो वापस पार्श्वनाथ भगवान का जीव 10th देवलोक में जाते हैं. In the 9th bhav, the Jeev of Marubhuti became Mahardik Dev in Mahaprabh Viman of the 10th Devlok called Pranath with the Ayushya of 20 Sagropams. In this bhav, he celebrated the 500 Kalyanaks of Tirthankar Paramatma. अभी पार्श्वनाथ भगवान का जीव है ना, वो एक ओनली ऐसा जीव है जिसने 500 तीर्थंकर के कल्याणक सेलिब्रेट किए देवलोक में. ओके, तो उत्तम उन्होंने यहाँ पे जो उनका जो यश नाम कर्म है, भगवान पार्श्वनाथ भगवान का सबसे ज्यादा यश नाम कर्म है, राइट, वो इसके कारण क्योंकि उन्होंने 500 बार तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक उन्होंने सेलिब्रेट किया. On the other hand, Jeev of Kamat was bearing Duk in the 4th Narak
with the same Ayushya. After the birth of Kamath, he went 4 times to Narak. 2 times he became snake, one time as lion, and 1 time as human, at that too of an inferior Bhil tribe. On the other hand, the Jeev of Marubhuti went to Devlok 4 times. He became Chakravarti once. He was born as an elephant once, and he also suffered a pain at the hands of Kamath. In the birth of any Tirthankar Paramatma, this has happened for the first time that one particular Jew was responsible for the death for 5 different occasions of तीर्थंकर परमात्मा. ये पहली बार ऐसा होता है पूरे अवसरपिणी और उत्सर्पिणी काल में कि एक तीर्थंकर परमात्मा का एक जीव ने 5 बार 5 भव में मारा होगा. दिस हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम. इतना वैर भाव. तो अभी लास्ट भव है पार्श्वनाथ भगवान का. ओके, 10th भव की बात करते हैं. In the Kashi Desh of Bharat Kshetra, in this Varanasi city, King Aswashen was ruling. He had Queen Vama Devi. Their lineage was Ishwakukul. After completing the life in 10th Devlok, the Jeev of Marubhuti came to the womb of Queen Vama Devi. On the 4th day of Falgun, Queen dreamed 14 great dreams. After 9 months and 7.5 days, Vama Devi delivers a green-colored baby boy with a snake as a चिन्ह on Posh Dasam. तो आज के दिन पार्श्वनाथ भगवान का जन्म होता है, तो that's why we are doing this जीवन चरित्र. 56 Dik Kumaris and 64 Indras celebrated the memorable birth ceremony. King Ashwashan decorated the whole Varanasi Nagari like Devlok. When Bhagwan was in Mata's Garbh, Queen Vama Devi saw a snake passing by, and that's why Bhagwan was named as Parshva. Parshva matlab snake. Okay. Having height of 9 hands, Parshva Kumar became adult. He was bright green color like sapphire. Parshva Kumar saw his Bhogavali karma remaining and with his parents' request married Prabhavati. Once Parshva Kumar was sitting in the gallery watching the town. He was surprised when he saw people of the town going in the same direction with various puja samagri in the hands. He inquired and came to know that Kamath, who was born as a poor Brahmin, was doing various tap. अभी कामत का जीव वो मनुष्य मिलता है और वो ब्राह्मण बनता है और वो काफी तपस्या कर रहा है. All were going to worship of the Kamath who was doing पंचांगनी तप. अभी पंचांगनी तप ऐसा होता है कि अग्नि प्रगटाते हैं और उसके गर्मी में वो लोग कौसर्ग और वो ध्यान करते हैं. तो वो काफी मुश्किल तप है. तो कामत का जीव अभी वो ब्राह्मण बना है और वो पंचांगनी तप कर रहा है. Parshva Kumar also came with his family to get a glimpse of Kamath. Avdignani Bhagwan saw a snake couple burning in the fire of Panchangni Tap. Instantly he said to Kamath, "Compassion is the mother of all religion. The snakes are burning in the fire." Till now, Kamath only met people who appreciated him. How can he bear the truth? Kamath replied, "Hey prince, you ride elephants, you ride horses, you fight wars, play and enjoy. What do you know about the religion?" Pasha Kumar immediately ordered the soldiers and took the burning wood and carefully shattered the wood, and 2 big snakes came out. Pasha Kumar recited Naukar mantra and the snake died Samadhi Maran, and in the next birth they are born as Dharmendra Dev. Okay, अब snake का जीव धर्मेंद्र भुवनपति के देव में उत्पन्न होता है. All started singing glory of Pasha Kumar. Kamath went elsewhere. He did various types of taps and ultimately he died and he becomes Dev as known as Meghmali Dev in Bhuvanpati Devlok. भाई कामत का जीव वो अभी भुवनपति देवलोक में उत्पन्न होता है. One day Pasha Kumar went to the art gallery and he saw a picture of Nami Kumar's marriage and a picture of Nami Kumar returning, basically renouncing, his wife, वापस आते हैं. So he knew it was his time for his diksha. Lokantik Devs came and requested Bhagwan to give Varshidan. After giving Varshidan for a year, Bhagwan sitting in Vishala Palki came to Ashram Pad Udyan with thousands of devs and people. On Maksar Vad Agyaras, Kal ke din, okay, Maksar Vad Agyaras, Bhagwan, now 30 years old, took Diksha with 300 kings. And immediately after taking Diksha, Bhagwan ko Manapuragnan utpann hota hai. On next day, he broke the Attam Tap with kheer at the place of Dhanya
एट कब तक नगरी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग पोष दशमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग 3 एकादशी क्यों करते हैं। तो इफ यू सी द कोई भी तीर्थंकर चरित्र, ऑल द 24, जब कोई भी भगवान ने दीक्षा लिया है, उन्होंने जो पारणा किया है, आइदर वो शुगर वाटर से किया है, मतलब शुगर कैन के जूस से किया है, या फिर वो खीर से पारणा किया है। तो हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स व्हाई वी डू 3 एकादशास। हम लोग भगवान का जो दीक्षा का जो 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 पारणा है, भगवान जनरली अट्ठम तप करते हैं या छठ करते हैं दीक्षा के वक्त। और अभी भी वो प्रथा चालू है, जो भी जीव दीक्षा लेता है अभी वो दीक्षा के वक्त वो छठ करता है या अट्ठम करता है। और पारणा में आइदर वो खीर लेता है और या शुगर वाटर लेता है, तो अभी भी हम वो फॉलो करते हैं। बट दिस इज द होल रीजन वी आर डूइंग द पोष दशमी आराधना एंड वी आर डूइंग 3 एकादशा। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ जन्म एंड दीक्षा कल्याणक। एक एक क्वेश्चन टू एवरीवन। अभी जो पोष दशमी है, इट कम्स इन द मंथ ऑफ मार्गशीर, राइट? मार्गशीर नौम दसम ग्यारस, तो उसको पोष क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड पोष? मीना मैन को पता है, पर और किसी के पास आंसर है? व्हाई डू वी कॉल पोष दशमी इवन दो इट्स इन मंथ ऑफ मार्गशीर? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो पहले क्या होता था, और अभी भी मारवाड़ी में वो प्रथा है। पहले क्या होता था कि न्यू मंथ वो वध एकम को स्टार्ट होता था। अभी न्यू मंथ सुद एकम को स्टार्ट होता है, वो ओके है, वो महाराज साहब ने चेंज किया। पर पहले वध एकम को न्यू मंथ स्टार्ट होता था। और तो 14 डेज का गैप आ गया। तो पार्श्वनाथ भगवान को जो जन्म था वो पोष महीने में था। अभी वो सेम वो मार्गशीर में आ गया, तो दैट इज ओनली रीजन वी आर सेलिब्रेटिंग इन द मंथ ऑफ मार्गशीर। पर वी स्टिल कॉल इट द सेम, अभी भी हम पोष बोलते हैं, क्योंकि वो वो प्रथा है अपनी, वो अपनी परंपरा है। तो इसलिए हम उसको पोष दशमी बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे फिर मेघमाली देव केम देयर एंड डिड घोर उपसर्ग ऑन भगवान। He released various types of animals, dangerous lions, snakes, but Bhagwan remained engrossed in dhyan. At last, he started with the heavy rainfall and heavy and hazardous lightnings. Dams and rivers were overflowing. The water started increasing very fast and reached Bhagwan's chest. At the same time, the thrones of Dhanendra Dev trembled. Using Avdignan, he came to know the upsarg of Meghmali Dev. He created lotus under the feet of Bhagwan and lifted the Bhagwan and created a chhatra with his 7 fanas on Bhagwan. Dhanendra Dev says to Meghmali, "You have tortured Bhagwan in many bhavs, and because of this you have suffered pains in Narak. Just think, Bhagwan will not sink in your rain, but you yourself will sink in the ocean of Sansar." Finally, Meghmali realized, and he apologized and returned to his place. Dhanendra also did Vandan to the Bhagwan and returned to his own place. Bhagwan had same feeling towards Meghmali and Dhanendra, and he did not have hatred towards Meghmali and did not have attachment towards Dhanendra. इसलिए हम बोलते हैं, कमटे धनेन्द्र च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति पार्शनाथ श्रेष्ठ। भगवान को सेम मनोवृत्ति है मेघमाली की तरफ और धनेन्द्र की तरफ, राइट? हमको जीवन में वही सेम मनोवृत्ति रखना है। कोई अपने पे द्वेष करे, अपना बुरा बोले, उसके तरफ भी प्रेम भाव, और जो अपना करे उसके तरफ भी कोई अटैचमेंट नहीं। तो वो पार्षनाथ भगवान से सीखना है। आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 84 days एज छद्मस्त, भगवान अगेन केम टू वाराणसी। इन Ashrampad Udyan, he was meditating below Ghatki Vruksh. He had Attham Thap. In Vaishak Nakshatra, 14th day of Chaitra Vad Chaudas, Bhagwan attained Keval Gnan. Devtas created Samosaran. Bhagwan gave Deshna under 77 Dhanushya tall Chaitya Vruksh, and many took Diksha and many took Shavak Vrat. Aryadat and 9 others became Gandhars. King Ashwashan, Mother Vamadevi, Queen Prabhavati also took Diksha. Parshva became Yaksh and Padmavati became Yakshini of the Bhagwan, always staying with the Bhagwan. Bhagwan passed 30 years in Gruvastha, 70 years as Sadhu, and after completing the Ayushya of 100 years, with 33 other Muni reached Samet Sikhar. He did Anshan for a month and went to Moksha with, on the 8th day of Shravan. The time period of 83,750 years had passed between the Nirvana of Naminath Bhagwan and Parshanath Bhagwan. Right? तो इतना टाइम पीरियड जाता है। अगर कोई पूछे हमको, राइट, दिस जस्ट फॉर नॉलेज, कि महाभारत कब हुआ था, इट वॉज 84,000 years back.
सब लोग 4000 5000 साल बोलते हैं, पर कल्पसूत्र के हिसाब से नेमिनाथ भगवान ही वॉज 83,750 ईयर्स बैक. ओके, सो अपने हिसाब से महाभारत वॉज 84,000 ईयर्स बैक. कोई पूछे रामायण कब हुआ था? ओके, तो नेमिनाथ भगवान 84,000 ईयर्स बैक थे. उसके पहले नमीनाथ भगवान 5 लाख साल पहले थे. ओके, उसके पहले मुनीश्वर स्वामी 11 लाख साल पहले थे. तो मुनीश्वर स्वामी के समय ये रामायण हुआ था. तो रामायण जैन धर्म के हिसाब से इट वाज 11 लाख ईयर्स पहले. सो दैट इज अ ट्रूथ. ये लोग कुछ 10,000 साल बोलते हैं, वो सब बराबर नहीं है. रामायण वाज 11 लाख ईयर्स और महाभारत वाज 84,000 ईयर्स पहले. ओके, जस्ट फॉर नॉलेज. तो यहाँ पे हम जीवन चरित्र फिनिश करते हैं और हम आराधना शुरू करते हैं. तो हमने 12 साथिया तो कर दी है. जो भी घर पे आप भी 12 साथिया कर सकते हो. और हम अभी सबसे पहले 12 प्रदक्षिणा देते हैं. यहाँ पे भगवान है तो भगवान की 12 प्रदक्षिणा देते हैं और 12 खमाशना देते हैं. मीना बहन. सकल समेहित पूर्वा कल्प वृक्ष अवतार पार्श्व प्रभु प्रसन्न सदा संखेश्वर सुखकार. ओम ह्रीं श्रीं अशोक वृक्ष प्रातिहार्य युक्ताय धनेन्द्र पद्मावती पूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः. इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्याय मथेन वंदामि. सकल मनोरथ पूरवा मंगल केली निवास वामानंदन वंदिये श्री संखेश्वर पास. ओम ग्रीं श्री शूर पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य युक्ताय धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः. इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्याय मथेन वंदामि. प्रणमो प्रेमे पासजीन श्री संखेश्वर देव सुर नरवर किन्नर सदा जेहनी सारे सेव. सकल गुण कर पासजी शंखेश्वर अभिराम मन वांछित सुख संपजे नित समरंता नाम. ओम ग्रीं श्री दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य युक्ताय धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः. इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्याय मथेन वंदामि. नंबर 4. सकल सुहंकर पासजी शंखेश्वर सिरदार शंखेश्वर केशव जरा हरत करत उपकार. श्री शंखेश्वर साहिबो सुरतरु सम अवदात पुरुषादाणी पासजी खट दर्शन विख्यात. ओम ग्रीं श्रीं चामर युगल प्रातिहार्य युक्ताय धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः. इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय निस्याय मथेन वंदामि. सकल सिद्धिदायक सदा संखेश्वर प्रभु पास प्रणमो पदकज प्रेम थी आणी मन उल्लास. सकल कुशल कमलावली भासक भाण समान श्री संखेश्वर पासना चरण नमो धरि ध्यान. ओम ग्रीं श्री सिंहासन प्रातिहार्य युक्ताय धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः. इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी मथेन वंदामि. श्री संखेश्वर पासजी
हरिजरा हरनार तस प्रणमु प्रेमे करी शिवरमणी उरहार श्री संखेश्वर पासजी प्रणमु एहन पाय अश्वसेन राजा कुळे जन्म्या श्रीजिनराय। ओम ग्रीम श्री भामंडळ प्रातिहार्य युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जय निस्याय मथेण दुरित टळे वांछित फळे जो नाम समरंत श्री संखेश्वर पासजीन ते प्रणमु एकांत श्री संखेश्वर धणी प्रणमी पासजीनंद नाम जपंता जेहनु आपे परमानंद। ओम ग्रीम श्री देव दुंदुभी प्रातिहार्य युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। इच्छामि खमा समणो वंदे जय निस्याय श्री संखेश्वर पार्श्वजीन प्रणमो पद अरविंद अश्वसेन नृप कुलतिलो वामा देवी नंद इंद्र चंद्र नागेंद्र नर सेव सारे सार पार्श्व संखेश्वर प्रणमता सफल हुए अवतार। ओम ग्रीम श्री छत्रत्रय प्रातिहार्य युक्ताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जय निस्याय मथेण वंदन। બધા મોટેથી બોલી શકે છે ઈચ્છામી ખમાસનો આવે ત્યારે। શ્રી શંખેશ્વર સુખ કરું નમતા નવે નિધાન વિઘ્ન વિદારણ વીરવાર વાસુધા વાદ્યવાન श्री संखेश्वर पासजी प्रणत पुरंदर देव अलिय विघ्न दूर करे करे जा ससुर से। ओम ग्रीम श्री ज्ञानातिशय युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। श्री संखेश्वर पास जी मोटो महिमा जास चिंतामणि चिंता हरि आपे लील विलास। ओम ग्रीम श्री वचनातिशय युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। सकल समीहित सुरलता सिंचन नव जलधार श्री संखेश्वर पास जी प्रणमु प्राण आधार। ओम ग्रीम श्री पूजातिशय युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। इच्छामि હવે લાસ્ટ છે જેને પણ બધાને ઊભા થઈને કરવો છે। સકળ મનોરથ પૂરવે શ્રી સંખેશ્વર પાસ પરતા પૂરણ પ્રણમીએ લહીએ લીલ વિલાસ અશ્વસેન કુલ ધ્વજ સમો વામા કેરો નંદ श्री संखेश्वर प्रणमता होवे नित आनंद। ओम ग्रीम श्री अपाया पद्मातिशय युक्ताय श्री धनेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। इच्छामि खमा समणो वंदे उजा
मथेण वंदन ચૈતવંદન ના, આપણે 12 લોકેશનનો કૌશક કરી લઈએ, પછી ચૈત્યવંદન કરીશું. इच्छामि क्षमा समरो वंदे ओम जावणी जाय निशियाय मतेन वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी आराधनार्थे कौशक करू इच्छम श्री पार्श्वनाथ स्वामी आराधनार्थे कर्मी कौशकम वंदनवती पूर्णवती सकारवती समानवती भोईलाभवती निरुगस्कवती सद्याय में देह धारणाय अनुपय वर्तमान टॉमिक कौशकम अन्नत उससेरम निसस्यम खाश्रम शम जंभायरम उदरवाणी सगम बमले पितम चाय सुमि मंगल समचालयम सुमिम खेल समचालयम सुमि रीतिनम चालयम એમ આગળ અભોગો રાજ્ય મેં કૌશક ગો 12 લોગસ ચંદેસો નિમલારાય સુધી ના આવડે તો 48 નોકાર્સ જાવળિયંતાણમ ભગવંતાણમ નમુક્કાને ન પણ વિઠા ખાયમ ટાણેરમ મોણેરમ જાણેરમ અપ્પાનમ વોસિરામી.
नमो नित्रम लोगस उजोगरे दम्मति तयरे जिने हरियंति कीते समशवि संपि केवली उसमजम चवंदे संभव ममिनं धरम समयिंच पम सासम जिरं चिंतन पम वंदे सोविंच फुवनंतम सीलसिजम च वासुपजम च विमल मनम तंजिरम धम्म संदिम च वंदामि कुंतु मनम च वल्ले वंदे मुनि सोन्यामि जनम च वंदामि रिट्टनेमि पासम तद्मनम च एवं अभित्वा व्यूयरमना पैन जनमना चवि संपि जिनमना तित्ते राम पसेंतु कित्यव नियमया जे लोगत्ना से दारुग बोइलापम समाय मनमुतम निंतु चंदेसु निमलय रायचे स्वयं पायसरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममनि संतु इच्छामि कमासमनो वंदे ओम जामनी जाय निसीयाय मथे वंदामि। હવે આપણે ચૈત્યવંદન કરીશું. મીનાબેન બોલાવજો ચૈત્ય. इच्छामि खमासमनो वंदे उजावणी जाय निस्याय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान इरे वियम पडिकमामि इच्छामि इच्छामि पडिकमि वीर्य वियाय वीरानाय गमनमने पाणकमने बियकमने हरियकमने ओसा उतिंग पण गदग मट्टे मकड़ा संताना संकमने जेमे जीवा विराहिया ए गेंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहयावतिया लेसिया संगया संगट्टिया परियाविया किल्लमिया उद्धविया ठाणा उठाणम संकामिया जीव्या वव्रव्या तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्सौत्री कर्णेनं पायचित कर्णेनं विसोहि कर्णेनं विस्सल्लि कर्णेनं पावाणं कम्माणं निघायणं ठाये ठामि कौसगम अनत्थ उस्सस्येणं निस्सस्येणं खास्येणं छियेणं जम्भयेणं उड्डोयणं वाय निसगणं भमलिये पित्तमुछाये सुहु में ही अंग संचाले ही सुहु में ही खेल संचाले सुहु में ही दिठी संचाले ही एव मैं एही मागारे मब्ब गोविरयो जिमे कौसो गो जाव अरिहंतान भगवंतान नमकाना परिमित ताव कायम ठाणे नम मोने नम जाणे नम एक लोगस नो कौसग न फावे तो चार नौकार ताव कायम ठाणे नम मोने नम जाणे नम मप्पान मोसिरा नमोरेन्ताणम लोगस उज्जो अगरे दम्मतिथ यरे जिने अरिहंते कित्ते समचौवि संपि केवले उसभ मजिय चवंदे संभम अभिनंदनम चसुमैंचम पौम पहम सुपासम जिणंच चंदपह वंदे सुविहिंच पुफ्फदंतम सियलसिचन वासुपूज्यंच विमल म्हणंत जिणंदमन संतिंच वंदामि कुंथुम अरंचमल्लि वंदे मुनि स्वयं नमि जिणंच वंदामि रिठने मि पासंत वद्धमाणंचम एवं मय भित्वा विहूय मला पहिण जर्मना चौबी संपि जिणवर तिथे रामे पसियंतो कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोग सौतमा सिद्धा आरोग बोहिलाभम समयवर्मुतमं दिंतुम चंदे सुनिमलैरा आयचे सोन्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतुम इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जाय निस्याय मथेण वंदामि इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जाय निस्याय मथेण वंदामि इच्छामि खमा समणो वंदे उजावणी जाय निस्याय मथेण वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान चैत्यवंदन करो इच्छम. सकल कुशलवल्ली पुष्करावर्त में गो दुरित तिमिर भानु कल्प वृक्षोपमान भवजल निधि पोत सर्व संपत्ति है तू सभवतु सततम वह श्रेय शांतिनाथाय श्रेयसे पार्श्वनाथाय आस परे प्रभुपास जी तोड़े बहुपास वामा माता जन्मिया हिलंचन जास अश्वसेन सुत सुख खरु नवहात्नी काया काशी देश वरासी पुण्य प्रभु आया 100 वर्ष नु आवखु वे पाड़ी पार्श कुमार पद्म गए मुक्ते गया नमता सुख निर्धार जंकिंची नाम तित्तम सगे पाली मानु चलोए जायनि मैं टाइम समवाई वंदामि नमोत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम ऐक्यराणम तिथैराणम सैंस बुद्धाणम पुरीसुत्तमाणम पुरीसस्याणम पुरीसवर पुंडर्याणम पुरीसवर गंधार्थीणम लोगोत्तमाणम लोगनाहाणम लोगहियाणम लोगपैवाणम लोगपज्जो अग्राणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशयाणम धम्मनायकाणम धम्मसारहिणम धम्मवरचौरंत चक्रवटेणम अपरिहैवर्णनम दंसनधराणम वियट्टछौमाणम
જીનાનમ જાવયાનમ તિન્નાનમ તારયાનમ બુદ્ધાનમ બોયાનમ ઉત્તરમગણમ સૌવનુણમ સૌવદરિસેણમ શિવમયલમ અરુવમ અનંતમ અક્ષયમ બાહમ પુનરાવૃત્તિ સિદ્ધિ ગઈ નામ ધે ઠાણમ સંપત્તાણમ નમો જીણાનમ જય અભયાનમ જય સિદ્ધા જય ભવિસંતિણા ગઈકાલે સંપય્ય વટ્ટમાણા સવેતિ વિણવંદામી જાવંતી ચેઈ આઈમ ઉડેય અહયતિર્યલોય સંવૈંતય વંદે એ સંતો તથ સંતાઈમ ઈચ્છામી ખમા સમણ વંદે ઉજાવણી જાય નિશ્ચય મથેણ વંદાન જાવંત કેવી સાહુ ભરય રવય માવી દેહેય સંવૈ સિંતેસી પણ હો તિવેણતિ દંડ વિર્યાણમ. નમો રસ સિદ્ધાચાર્ય ઉપાધ્યાય સર્વ સાધુભ્ય. પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું સ્તવન લેશું આપણે. તું પ્રભુ મારો હું પ્રભુ તારો क्षण एक मुझने नाही विसारो मेहर करी मुझ विनंती स्वीकारो स्वामी सेवक जानी निहारो तू प्रभु मारो हूँ प्रभु तारो क्षण एक मुझने नहीं विसा लाख 84 भटके प्रभु जी આવ્યો હું તારે શરણે હો જીનજી દુર્ગતિ કાપો શિવ સુખ આપો ભક્ત સેવકને निज पद स्थापो तू प्रभु मारो हूँ प्रभु तारो क्षण एक मुझने नाही विसारो अक्षय खजानो प्रभु तारो भर्यो छे आप कृपाळु में हाथ धर्यो छे वामानंदन जग वंदन प्यारो देव अने रामा हे तू छे न्यारो तू प्रभु मारो हूँ प्रभु तारो क्षण एक मुझे ने नाही विसारो पल पल समरो नाथ संखेश्वर समरथ तारण तू ही जिनेश्वर प्राण थकी तू अधिको वहालो प्राण थकी तू अधिको वहालो दया करी मुझने नयने निहारो तू प्रभु मारो एक मुझे ने नाही विसारो भक्त वत्सल तारो विरोध जानी केड़ न छोड़ू एम ले जो जानी चरणों नि सेवा नित नित चाहू घड़ी घड़ी मन माहे हूँ उमा हूँ तू प्रभु मारो हूँ प्रभु तारो क्षण एक मुझने नाही विसारो ज्ञान विमल तुझ भक्ति प्रभावे भव भवना संताप मिटावे अमिया भरेली तारी मूर्ति निहारी पाप अंतरना देजो पखाड़ी तू प्रभु मारो हूँ प्रभु तारो क्षण एक मुझने नाही विसा
सकरं पासं पासवन्दामि कमगर्मुखं विसर्विसनिन्दासं मङ्गलकल्लाणआवासं विसर फुल्लिङ्गमन्तं कण्ठे जोसमनुवतस्य गह रोगमारि दुट्टजन्ति हो समं चित्तौ दुरेमन्तो तुच्छ परमविव फलो नरतिरे सुविजा पावन्ति न दुःखदोगच्छं तुः सम्मत्य लद्दे चिन्तामणि कपपाय अभये पावन्ति विज्ञरं जीवारमणं ठाणं इह संतो महायस्य बतिबरनिबरेण येन तादेव दिज्यभूमिं भवे भवे पासजनचन्द जय विराय जगुरु होम हम तोपाओ भवम भव निव मगान साइट फल सिद्धि लोग विरुद्ध चाओ गुरु जन पुआ परत करणम च सुहो गुरु योग तमयन सेवा मम कंडावारी जय जय वि निरा मंदिरम विराय तुह समय तई मंज उज्ज सेवा भवे भवे तुम चलनम दुख को कम को समाय मनम च बोइला प संपजो मायम तुनाम तुह नाम परमण करणम सर्व मंगल मांगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयति शासनम हरियंचि राम कर्मिका सकम वनरते पुण्यते सकारवते समानवते बोइला भवत्याय निर्कुशकते सत्य में धिये दान अनुपे वजो टॉमिक सकम अन्नत ससिरम निससम खाश्रम जम जंभायरम उडोर वाणिसके ममले पितमचाय सुमे मंग समचालेम सुमेम खेल समचालेम सुमेम नीतिरम चालेम एवांगणे अबको इराविचमे कौसगो एक नौका नो कौसक थोय सामने पारजो जावारी अंतरम भगवंतरम नमो नो बेटा काम कान्या मोरम अपनम वो सिरामी मोरिंदरम नमो सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य पार्श्वजिनंदा वामानंदा जब गर्भे फरी सुपना देके अर्थ विशेषे कहे मद वामनी जिनवर जाया सुरहुल राया हुआ रमणी प्रिय नैमी राजी चित्त विराजी विलोकित व्रत लिए इच्छामी खमा समरो वंदे ओम जामणी जाय निसी आय मते वंदामी। तो आपरे हजू थोड़ा टाइम है पण मेन तो आज तमे एक सामयिक करीने पॉसिबल हो तो 20 माना गणवानी है और जो 20 शक्य ना है तो एटलीस्ट 5 माना तो गणजो। ओम ह्रीम अनम श्री ओम ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ अरहते नमः के ओम ह्रीम अनम श्री पार्श्वनाथाय नमः के ओम ह्रीम श्री धर्मेंद्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। कोई पण मंत्र आ 3 माथी यू कैन डू 20 मालास અને ના હોય તો 5 માલાસ અને એટલીસ્ટ આજે રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કરશો જ। આજે 5 ને 20 ચોવીયાર આવે છે તો કશું તપ ના થાય તો રાત્રિ ભોજન તો અવશ્ય કરજો। અને નાવ આપણે 108 પાર્શ્વનાથ ભગવાનના નામ સ્મરણ કરીશું। અહીંયા મીનાબેન 108 पार्श्व भगवान ना नाम। ओम ग्रीम श्रीम शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ओम ग्रीम श्रीम शंखेश्वर पार्श्वनाथ। ओम ग्रीम श्रीम जिरावला पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम केसरिया पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम स्तंभन पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम मनमोहन पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम ज्योतिंगड़ा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम संखला पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम गंभीरा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम गाडलिया पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम कलिकुंड पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम शामळा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम मुलेवा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम रिंकार पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री सुख सागर पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री मोहरी पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री पौशिना पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री विघ्न पहार पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री फुल्लिंग पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री नागपणा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री कल्याण पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री मनोरंजन पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री सुल्तान पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम सुल्तान पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम डोसला पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम पल्लविया पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम भिल्लडिया पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम पंचासरा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम कोका पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम कंकण पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम घिया पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम धनेन्द्र पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम पद्मावती पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम धिंगड़मल पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम वाड़ी पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम दूधाधारी पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम टांकला पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम भीड़ भंजन पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम वणछरा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम कंसारी पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम सोम चिंतामणि पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम सावरा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम वाराणसी पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम प्रगट प्रभावी पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम लोढ़न पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम अम्मी जरा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम कल्हारा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम चंपा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम सूरज मंडन पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम सहस्त्र फणा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम नवसारी पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम दोकड़िया पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम चोरवाड़ी पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम नव पल्लव पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम अमृत जरा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम बरेजा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम सप्तफणा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम भाभा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री भद्रेश्वर पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री द्रुत कल्लोल पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम भयभंजन पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम लोद्रवा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम संकट हरण पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम कुंकुम रोल पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम आशा पुराण पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम सिरोडिया पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम हमीरपुरा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम पोसली पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम कच्छुलिका पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम दादा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम सेसले पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्री राणकपुरा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम सोगठिया पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम वरकणा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम नवलखा पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम स्वयंभू पार्श्वनाथाय। ओम ग्रीम श्रीम
फल वर्धि पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री विजय चिंतामणि पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री मंडो वरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री करेड़ पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री वही पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री नवखंडा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री नागेश्वरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री अजाहरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री सेरिसा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री समेत शिखर पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री बटेवा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री उवस गहरम पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री अलौकिक पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम कल्पद्रुम पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम कुक्कड़ेश्वर पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम भुवन पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम रावण पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम कामित पुराण पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री अवंती पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम समीना पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्री चंदा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम मक्षी पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम अंतरिक्ष पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम जगवल्लभ पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम गिरिव पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम मनोवांछित पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम विमल पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम विघ्नहरा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम महादेवा पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम आनंद पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम चारु पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथाय ओम ग्रीम श्रीम गौड़ीजी पार्श्वनाथाय नमः। थैंक यू। આપણે ઓનલાઈન સુરેખાબેનને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો છંદ ગાવો છે. સુરેખાબેન આપ ગવડાવજો છંદ. 2 મિનિટ. હા, સુરેખાબેન છે? હું ચાલુ કર. હા, બોલાવજો. સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે. હા, ઓકે. આ પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ભોજનનો તમારો મ્યુટ થઈ ગયો. અનમ્યુટ કરો તમે. સુરેખાબેન, તમારો મ્યુટ છે. સુરેખાબેન, હા તમારો, હા બોલાવજો. હવે સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે. તો આમાં આપણે મહારાજ સાહેબ શ્રી મહારાજ સાહેબ શ્રી ગુમાન વિજય ના શિષ્ય સૌભાગ્ય વિજયે આ ભોજનનો થાળ બનાવ્યો છે અને એ આપણે શાંતિ સાંભળીએ. સંભળાયું હવે બરાબર? હા, બોલો. બોલાવો બોલાવો. હા, ચૈતન્યભાઈ સંભળાય છે? જો અહીંયા સંભળાય છે, તમે પ્રકાશો. માતા મામા દે બોલાવે જમવા પાશ્વને રે, જમવા વેળા થઈ છે રમવાને ચિત્ત જાય ચાલો, તાત તુમારા બહુ થાય ઉતાવળા રે, વેલા હાલો ને ભોજન યા તારા થાય, માતા મામા દે બોલાવે જમવા પાશ્વને રે. માતાનું વચન સુનીને જમવાનું બહુ પ્રેમ શું રે, બુદ્ધિ બાજ ચઢાડી બેઠા થઈ હોશિયાર, વિનય થાલ ઉજારી લાલન આગળ મૂક્યો રે, વિવેક વાટકીયો શોભાવે થાર મુજાર, માતા મામા દે બોલાવે જમવા પાશ્વને રે, સમકિત શેલડીના છોલીને ગઠ્ઠા મૂક્યા રે, દાનના દાણા ફોલી આપ્યા ખાસ, સમતા સીતાફળનો રસ પીજો બહુ રાજ્યા રે, ભક્તિ જામળ પ્યારા આરોગો ને પાસ, માતા મામા દે બોલાવે જમવા પાશ્વને રે, મારા નાનડિયાને ચોખ્ખા ચિત્તના ચૂર મારે,
सुमती साकर ऊपर भाव शुभेलू द्रुत भक्ति भजिया पीरस्या पार्श्व कुमार ने प्रेम शूरे अनुभव अथाणा चाखो ने राखो सरत माता मामा दे बोलावे जमवा पार्श्वने रे प्रभु ने गुण गुंदाने ज्ञान गुंदवरा पीर श्याम जो मानव धारण काज जान पणानी जलेबी जमता भागे भूखड़ी रे दया दूध पाक मीरस आरोगो ने आज माता मामा दी बोलावे जमवा पार्श्वने रे संतोष सीरो ने वरी पुण्यनि पूरी पीरसी रे संवेग साक बला छे दातर दिली दार मोटाई माल पुआने प्रभावती ना पूडला रे विचार वड़ी वगारी जमजो मारा वाल माता माता वामा दे बोलावे जमवा पार्श्वने रे रुचि रतने वड़ी रूड़ा पापड़ पीरस्या रे चतुराई चोखा ओसावी आण्या भरपूर ऊपर इंद्र दमनना दूध तापे तातूर प्रीते पीरस्यु जमजो जग जीवन सुर नूर माता भामा दे बोलावे जमवा पार्श्वने रे तत्व तंबोड़ लीदा सियल ने सोपारी साथ अक्कल इलायची आपीने माता मुख वधेरे त्रिभुवन तारी तरजो जग जीवन जगन्नाथ माता वामादि बोलावे जमवा पार्श्वने रे प्रभुना थाळ तना जे गुण गावे ने सांभळे रे वेद वेदांतर समझे ज्ञानी ते कहवाय गुरु गुमान विजयनो शिष्य कहे सिर नामिने रे सदा सौभाग्य विजय गाये गीत सदाय माता वामा दे बोलावे जमवा पार्श्वने रे प्रीते पाणी पीडा प्रभावती ना हाथ तीरे माता वामा दे बोलावे जमवा पार्श्वने रे संभळाયું હા સરસ હતું અનુમોદના થેન્ક યુ એવરીવન તો આપણે અહીંયા આપણે આજનું પોષ દસમીની આરાધના સમાપ્ત કરીએ છીએ થેન્ક યુ ખાવાનું ખાઈ લે પછી પૂજાનું કપડા પહેરીને જઈશું બેરામ પૂછ્યો તો લાગે મને ખબર છે